सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। डियर स्टूडेंट्स, ये 10th साइंस के यूनिट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का टॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पिछले क्लासेस को रिमाइंड करेंगे, हमने मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ स्टडी की है, वाटर के साथ स्टडी की है और एसिड्स के साथ हमने ये रिएक्शन स्टडी की है। और डियर स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि इन रिएक्शंस में कुछ मेटल्स जो है दे आर हाईली रिएक्टिव, कुछ मेटल्स है दे react with these reagents with a less reactivity, or they are less reactive towards these reagents, and we have found certain metals which have least reactivity towards these reagents, or we found them unreactive. So from this concept कि हमारे पास मेटल्स जो है, मेटल एलिमेंट्स जो है, कुछ हाईली रिएक्टिव है, कुछ लेस रिएक्टिव है और कुछ मेटल्स लीस्ट रिएक्टिव है टुवर्ड्स दीज रीजन्स, दैट इज ऑक्सीजन, वाटर एंड द एसिड्स। सो यहाँ से हम इन मेटल्स को अरेंज कर सकते हैं। सो वी कैन अरेंज these metals on the basis of their relative reactivity. So dear students, we can arrange these metals on the basis of their reactivity, और उसी arrangement को, उसी order को we call that series as activity series or reactivity series. So I will write here what is the activity series or reactivity series. So it is the arrangement of metals in a vertical column in order of decreasing reactivity, that is downwards, is called the activity or the reactivity series. So dear students, जब हम metals को vertically place करते हैं, suppose हम पहले X को place करते हैं, then another, suppose L, then F, and when we place these metals vertically in order of decreasing, X जो है highly reactive है, उसके बाद L is lesser reactive than X, and so on and so forth. And this series that we obtain on the basis of their relative reactivity, this series is called the activity series or reactivity series of metals. Dear students, with this series we have a problem. This is the important. We have a problem with this series or with this concept. The problem is that कि अगर हम पूरे मेटल्स को ऐसे ही कंपेयर करें कि मेटल्स इन रीजन्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं, इन रीजन्स के साथ कैसे कंबाइन करते हैं, ये देखा गया है कि कुछ मेटल्स जो होते हैं वो या तो इन रीजन्स से वो कंबाइन नहीं करते हैं, या हम अगर वो करते हैं
So there are certain metals which do not combine with the above regions, और another problem is that अगर ये metals इनके साथ react करते हैं but we are not able to find out the speed of the rate or the rate of the reaction or the reactivity of that metal. So अगर हम इसी concept को लेंगे कि metals की reaction इन regions के साथ उसी कंसेप्ट को लेके अगर हम एलिमेंट्स जो मेटल्स हैं उनको अरेंज करेंगे वी गेट द रिलेटिव रिएक्टिविटी सीरीज डियर स्टूडेंट्स। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुछ मेटल्स या तो इन रीजन्स के साथ कंबाइन नहीं करते हैं या अगर करते हैं तो हम वो रिएक्टिविटी डिफरेंट मेटल्स की स्पीड ऑफ द रिएक्शन विद दीज रीजन्स वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सो व्हाट वी डू, we study the relative reactivity. We study the relative reactivity of metals on the basis of displacement reaction. Displacement reaction. So dear students, now we have arrived to a new concept कि अब हम metals की जो reactivity है डिफरेंट मेटल्स को की अगर हम रिएक्टिविटी को कंपेयर करें और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में उनको प्लेस करेंगे तो वी हैव टू फॉलो द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम इस रिएक्शन का प्रिंसिपल देखेंगे। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस रिएक्शन? डियर स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन का प्रिंसिपल ये है कि सपोज हम एक मेटल को ले रहे हैं, वी आर टेकिंग ए मेटल, सपोज इट इज मेटल ए। अगर हम इस मेटल को सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, हम एक मेटल को दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ ऐड करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, इनको कंबाइन करते हैं, तो यहां पे क्या होता है, इफ अगर A is more reactive than B, A part, अगर A मेटल B मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या होगा कि A जो है इट विल डिस्प्लेस द मेटल B फ्रॉम इट सॉल्ट। सो यहाँ पे जो बनेगा दैट विल बी द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल A प्लस B यहाँ पे बाहर निकलेगा। तो इट मीन्स दैट A जो है it has displaced metal B from its salt solution. The second option is that if A is less reactive than B, dear students, जो हमने A metal B के salt solution में ऐड किया है, अगर A B से less reactive होगा तो you have to remember that here we cannot observe any reaction, so no reaction, because यहाँ पे A जो है it is less reactive, it is not able to displace metal B from its salt solution. So ये concept हमें
यूटिलाइज करना है जिससे हमें डिफरेंट मेटल्स की रिएक्टिविटी पता चलती है, तो हम उन मेटल्स को फिर एक वर्टिकल कॉलम में अरेंज करेंगे इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, और उस सीरीज को हम एक्टिविटी सीरीज कहते हैं. सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. So first example is reaction between zinc and copper sulfate solution. So dear students, यहाँ पे हम zinc और copper sulfate solution की reaction को discuss करेंगे. Suppose we are taking zinc pieces. These are zinc metal pieces. We take copper sulfate solution in a beaker. Dear students, this is the copper sulfate solution. This is CuSO4 and this is blue colored. And what we do, we are adding these zinc pieces to the copper sulfate solution and we observe the reaction. Dear students, what happens? Slowly and gradually this blue color starts fading. And in this beaker and we see a solution that is colorless, and in the bottom we observe brown, reddish brown pieces. So it means that in this reaction we observe significant color change, and this was blue colored solution copper sulfate, and here when we added zinc pieces to this solution and its color faded and now it's colorless, and also we see the reddish brown pieces that we found at the bottom of the beaker. So dear students, यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने zinc solid को लिया, we put it in copper sulfate solution. So this is zinc metal, this is copper sulfate. So what happens, this zinc, it has displaced copper from its salt solution, it forms a zinc sulfate aqueous plus copper, and this copper, this is the reddish brown pieces, that it means that it is copper, and this colorless solution, it is zinc sulfate. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास कॉपर सल्फेट है, हमने कॉपर सल्फेट को लिया, जब हमने इसमें जिंक ऐड किया तो वी फाउंड द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट. इट मीन्स दैट जिंक जो है, जिंक हैव डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. A is more reactive than B, so it means that zinc is more reactive than कॉपर. सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आपको याद रखना है, सपोज हम जिंक सल्फेट को लेते हैं और हमने इसके साथ ऐड किया कॉपर मेटल. डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फेट ऑफ दिस रिएक्शन? हम कॉपर मेटल को ले रहे हैं, हमने इस मेटल को जिंक सल्फेट सॉल्ट में ऐड किया है. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें देखना है कि इफ कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन जिंक,
उस सूरत में कॉपर जिंक को डिस्प्लेस करेगा, बट वी नो दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, सो जिंक कॉपर इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस जिंक, सो हियर नो reaction can occur. So this is how displacement reaction goes on when we compare reactivity of different metals. Dear students, we will discuss another reaction. So second reaction is between iron and copper sulfate solution. So dear students, suppose we are taking iron pieces and in a beaker this is blue colored copper sulfate solution, and when we add these iron pieces to this blue colored copper sulfate solution, what happens? This solution, blue colored, it turns into green colored solution. Green colored solution, plus there are some reddish brown pieces of metal settled at the bottom of this beaker. So here we can write the equation as this is iron, that is Fe solid, and we add it to blue color copper sulfate solution and we obtain a green colored solution. It means that here reaction has happened, that is visible from the distinct कलर चैन. सो यहाँ पे आयरन जो है इसने कॉपर को डिस्प्लेस किया है. इट हैज फॉर्मड आयरन सल्फेट salt, and this is green colored salt. This is the iron sulfate that has been formed in this reaction, plus copper solid, and this is the brownish colored copper metal. So here again it confirms that iron is able to displace copper from its salt, so iron is more reactive than the copper. So dear students, similar reactions can be studied between metals and metal salts of other solutions or of other metals. So different reactions or similar reactions can be studied, and due to which we can compare reactivity of metals. Reactivity of metals. On studying these reactions, we have got the reactivity series of metals, which I will write here. That is potassium K, calcium Ca, sodium Na, magnesium Mg, aluminium Al, zinc Zn, then iron Fe, nickel Ni, then tin Sn, lead Pb, then comes the hydrogen H, and followed by copper
Cu, then mercury Hg, then silver Ag, then platinum Pt, then gold Au. So dear students, this is the reactivity series. So this is potassium. It is the most reactive metal. This is Au, gold. It is least reactive metal. And dear students, gold and platinum, last two, being least reactive, they occur in free state. Dear students, you can ask, or a question may arise in your minds, that why we are taking hydrogen here. Dear students, hydrogen being a non-metal, we are placing it here with the metals because hydrogen itself loses electron and it forms H positive. That is why we are considering it in this reactivity series. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आ सकते हैं कि कैसे हम कहते हैं कि पोटेशियम कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है. सो क्वेश्चन इज हाउ अ मेटल इज more reactive than another metal. So this is the question which may arise in your mind. Suppose अगर हम ये पहले दो एलिमेंट्स को लेंगे, पोटेशियम पहले है देन कैल्शियम. सो पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम. डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर सिंपल है कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड दे फॉर्म पॉजिटिव आयन्स. और जो मेटल easily electron lose करता है वो ज़्यादा reactive होगा. So it means that here potassium, it is losing electrons more easily than calcium. That is why potassium is more reactive than calcium. So dear students, दूसरा question ये है कि how some metals are more reactive than hydrogen and some are less reactive than hydrogen. Dear students, hydrogens के above जो भी metals place किए गए हैं इस vertical reactivity series में, they are more reactive than metals. और अगर हम उन metals को हाइड्रोजन के कंपाउंड्स में प्लेस करेंगे, रिएक्ट कराएंगे, जैसे H2O वाटर है या एसिड्स है, जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3. सो दीज मेटल्स, ऊपर वाले जो भी मेटल्स है, बीइंग more reactive than hydrogen, they can displace hydrogen from these compounds of hydrogen. तो हम ये कह सकते हैं कि ये metals जो है they are more reactive than hydrogen. और ये metals that lie below hydrogen in this vertical series, ये metals hydrogen से कम reactive है क्योंकि ये इन हाइड्रोजन के कंपाउंड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं. So dear students, this was the activity or reactivity series. I hope that you have learned well this concept. Thank you for watching this lecture.